Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Just answer me. My voice ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ clearly ଶୁଣା ଯାଉଛି? Good evening, Lopamudra. Yes, Lopamudra Ratha and Lopamudra Pradhan. बाकी ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି जी live quickly connect ହେଇଯାନ୍ତୁ. Then we will start the most awaited series that is ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ. ମୋ voice ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି? Give me a thumbs up ଯଦି ମୋ voice ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ clearly ଶୁଣା ଯାଉଛି. Hello everyone. Yes, audible. सो समस्त कनेक्ट हो जातु आज मच अवेटेड सीरीज जोटा कि आपनकर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन पाई भी हेल्पफुल रहइबो एंड जेहेतु आपण थंबनेल रे ऑलरेडी देखि साथबे कि आज रो सीरीज रहिछि से मेंस एग्जाम पाई मु स्पेशली प्रिपेयर करछि जेमति कि आपण जानि छथि ममता मई शतपथी वेरी गुड इवनिंग तो समस्त कहंतु मो वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली समस्त को सुना जाउछि कि नाही एंड देन वी विल स्टार्ट ता पूर्व समस्त कनेक्ट हो जातु हरिमोहन यस केमिति अछंती समस्ते क्विकली कनेक्ट जातु देन आम स्टार्ट करदे जल्दी आज सीरीज बिकज आप जानते जो मैंने भी मेंस प्रिपरेशन करुँच एंड बहुत दिन धरिकी वेट करते जो वीडियोटी आसो लाइक दृष्टिकोण ए न्यू कौन आसो बिकज लास्ट किसी मंथ धरिकी आम जब देखा ये प्रिलिम्स कंटेंट ही आसूला मेंस कंटेंट एथर कौन आसो से मेंशन कर स्पेशली थंबनेल आपण मैंने समस्त देखिपे कि ये हम स्पेसिफिकली आपणकर प्रिलिम्स एट द सेम टाइम ये आपनकर मेंस रे मध्ये हेल्प करिवो मेंस रे को क्वेश्चंस को डायरेक्शन हेल्प करिवो ता मध्ये आज नेकी मु आछि एथिरे कंपाइल करछि यस सो क्विकली जॉइन हे जानतु जो मानकर भी टेलीग्राम चैनल्स अछि व्हाट्सएप चैनल्स अछि सबुतरे याकू शेयर कर दियंतु वीडियो को जेते पारछंती लाइक करंतु शेयर करंतु ए वीडियो को सो दैट मैक्सिमम रीच हे पारु एंड समस्त याकू एट अ टाइम जॉइन करि पारंतु एंड यस सस्मिता वेरी गुड इवनिंग यस क्विकली निज निज भितर शेयर कर दियंतु एंड जो मैंने वीडियो को खास कर लाइक करना से लाइक कर दियंतु एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मते कहंतु केमिति अछंती समस्ते केमिति अछंती समस्ते प्रिपरेशंस केमिति चलची शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू जो चैट बॉक्स अछि नेक्स्ट 1 आवर पर्यंत आपण माने निजरो मतामत शेयर करि परिबे ई चैट बॉक्स रे जति भी क्लास हमर चलिबो से हिसाब रे आपण माने मो सहित डायरेक्टली कनेक्टेड ही परिबे जहा किछि आपण को क्वेरीज अछि क्वेश्चंस अछि मते डायरेक्टली पचारि परिबे ई वीडियो रे मु ट्राई करबी तार आंसर देबा पई एंड आजिरो वीडियो रे बा आजिरो लेक्चर रे खास करी बहुत सारा टॉपिक एमती अछि आपण गोटे डिफरेंट डायमेंशन मु प्रोवाइड कर देबी सो एई जो मैगजीन ता जतले रिलीज हबो सेतुर आपण माने नोट डाउन करनेबे फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन पई जो माने एई वर्ष दउछंती अपियर करछंती किबा जो माने फ्यूचर अपियर करबे बिकॉज कंटेंट सेम ही रहइबो आपण को मोरलेस ओडिसा स्पेसिफिक कंटेंट तो मु ट्राई करछि कि एमती भाबरे कंपाइल करबी आजिरो जो मैगजीन ता अछि किबा जो आपण जानि छंती एते सारा भल पाइबा देई आछंती दृष्टिकोण को खास करी मेंस रे हो किबा प्रीलिम्स रे हो समस्त एप्रिशिएट करछंती मैगजीन ता को एक्सक्लूसिवली फॉर ओएस एग्जामिनेशंस एंड आमे ताकू सेहित पई ही एई प्लेटफॉर्म को आनिथिलु दृष्टिकोण मैगजीन को एंड खास करी दृष्टिकोण मैगजीन रे मोर जते सब एक्सपीरियंसेस सेई एक्सपीरियंस को आपण को कंटेंट माध्यम रे आपण को सहित मु शेयर करे एंड एई जो कंटेंट आपण मानको आकू जाकी बहुत ही हेल्प करिवो सो निज निज भीतर शेयर कर दियंतु समस्त केमिति अछंती यस वेरी वेल सो स्टार्ट करिवा गिव मी अ थम्स अप समस्त रेडी समस्त जॉइन कर जानतु टाइम अछि हम पाखरे एबे भी एवरीवन इज रेडी ओके सो लेट्स स्टार्ट बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मु किछि कंटेंट आपण मानको देखै देबा पई चाहे कि लाइक आपण माने देखि पारथबे स्क्रीन रे लाइक हमरो न्यू बुक रिलीज हेछि जोटा कि मोस्ट अवेटेड बुक ओडिशा रिलेटेड ओडिशा इकोनॉमिक रिलेटेड कंटेंट बहुत ही लाइक आपनकर लाइक ओएस स्पेसिफिक कंटेंट बहुत ही कम मिले खास करी जतले हमें इंटरनेट रे सर्च करू बहुत सारा कंटेंट हमकू एमती भाबरे मिले भी नहीं एंड हमें प्रिपरेशन टाइम रे सेही गोटे लाइक डर थाए कि हमरो परफेक्ट टाइम पीरियड भितरे
हमर सिलेबस कवर हे पारिबो कि नहीं। दैट्स व्हाई जोटा रिसेंटली शंकर सर रिलीज करथिले बुकटा तार डिमांड बे बहुत जोर सोरे चलची। एंड आपण माने जो माने भी बुकटे बाय करनांती ताकू शीघ्र बाय करनियंतु बिफोर मेंस एग्जामिनेशंस एंड बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस आल्सो, बिकॉज आपण मानकू ई ओडिशा कंटेंट को कवर करके तापर जे कि नेशनल कंटेंट भी कवर करियर अछि। बहुत सारा स्टडीज अछि आपन को कवर करियर अछि एट द सेम टाइम। तो एथिरे जम्मा भी देरी न करके ए बुक को बाय करंतु। ए बुक रो इंपोर्टेंस हिया कि ए बुक रे से सबू टॉपिक आपन को ए टू जेड मेंशन अछि एंड इंक्लूडिंग रिसेंट डाटा, रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, रिसेंट बजेट एनालिसिस, से सब रिसेंट कंटेंट जोटा आपण इंटरनेट रे प्राय लाइक गूगल ले सर्च करंती से सब कंटेंट गोटे भलो मैनर रे जोटा कि निजे ऑथेंटिकेट वे रे लिखा है बुक को कंपाइल करा है एंड निजे ही मध्य एथिरे बहुत सारा इनपुट प्रोवाइड करा है सो दैट से जो इनसाइट आपण मानको प्रोवाइड करा जाय परिबो जोथरे आपण फ्यूचर रे जाय कि जेते भी क्वेश्चन आछी लाइक गोटे आपण पाई जाइथिबे एग्जांपल्स एथरो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हेतला सेतरे मैक्सिमम कंटेंट ओडिसा रो आस्तला। तो इकोनॉमिक्स पोर्शन टी कम आस्तला। तो आगु को जाय कि चांसेस या रहउची कि इकोनॉमिक्स पोर्शंस भी आसीबो एंड सेतरे ओडिसा क्वेश्चंस भी आसीबो। तो ता पूर्वरु आपण मानकर ए जो सब्जेक्ट को कवर करिबा एंड मास्टरी करिबा निहाती भाबरे दरकार। तो डेरी न करके शीघ्र ऑर्डर प्लेस करंतु बिकॉज लिमिटेड स्टॉक्स अछि। जदि आपण माने एबे संग संग ऑर्डर करछन्ती तो क्विकली आपण को मिल जिवो और एल्स बहुत ही लेट हेजो आपण मान को। ओके, सो देन आपण माने देखि परतबे स्क्रीन रे हमरो ऑलरेडी मेंस पे प्रिपरेशंस चली छी फुल फ्लेज रे फ्रॉम 22 अक्टोबर। एंड एई जो मेंस टेस्ट सीरीज बा मॉक टेस्ट सीरीज रे हमें डिस्कशन क्लास भी हमें ऐड करछु प्रोवाइड करछु एंड सैंपल आंसर मध्ये प्रोवाइड करछु। एंड सबुठारो इंपोर्टेंट कथा हला कि जो कंप्लेन स्टूडेंट्स को तरफ रही आसे लाइक कि हमरो ठीक टाइम रे खाता इवैल्यूएट हबो कि नाही एंड तारो फीडबैक पाइले ही हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भलो करिवु। तो सेही लाइक से टाइम पीरियड भितरे हमें जेमति कमिटमेंट करछु से टाइम पीरियड भितरे ही आपनकर खाता चेक ही होची विथ प्रॉपर इवैल्यूएशंस एंड फीडबैक जोतरे कि आपण माने वर्क करकी डेली बेसिस रे वीकली बेसिस ने जो टेस्ट दोचंती नेक्स्ट टेस्ट सेतरे आउ टिके एनहांस है कि आपनकर आंसर आसी पाउची। ओके, सो दैट्स व्हाई हमरो मेंस प्रोग्राम रे ऑलरेडी बहुत सारा एस्पिरेंट्स से कनेक्टेड हे गलेनी जो मानकर भी चाहूचंती इथरो मेंस जो माने भी अपियर करचंती से माने निहाती भाबरे कनेक्ट हुंतु क्विकली डेरी न करिके। एंड खास करी जो माने सिविल सर्विस लाइक यूपीएससी पे प्रिपरेशन करिया पे चाहूचंती हमरो न्यू बैच स्टार्ट हबो। ओके, लिमिटेड एडिशन हिसाब रे आपण माने जॉइन करंतु बिकॉज हमरो जानिचंती कि हमें क्वांटिटी ऊपर लाइक हमें ध्यान देउना हमें क्वालिटी ऊपर दउ बिकॉज लिमिटेड सीट हमर रहिछि एंड लिमिटेड सीट रे ही आपण माने मैक्सिमम आउटपुट एंड हमरो इनपुट एंड आपनकर आउटपुट जनरेट हे परिबो। ओके, सो ये तो थिला किछि लाइक एकेडमी रिगार्डिंग एंड आपण मानक पई इंफॉर्मेशंस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस। सो जिबा एबे टॉपिक ऊपर को कि आजिरो करंट अफेयर रे कोन रहिछि कोन इंपोर्टेंस एंती रहिछि कि जोथरे कि थंबनेल ले मध्ये मेंशन कराइछि कि ये मेंस एंड प्रीलिम्स दीटा जाको पई इंपोर्टेंट एंड को न्यू वे रे मैगजीन एबे आछि। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिबा कि जो रिसेंटली ओडिशा गवर्नर जो आसिले ओडिशा गवर्नर भाबरे सिलेक्ट ले लाइक रघुवर दास एंड तांकर कंटेंट स्टार्ट करके ब्रह्मोस टेस्ट हेतला हमरो एंड कलाहांडी रे जो लाइक केबीके स्कीम्स विषय रे हम जानिबा। एंड केबीके स्कीम्स आपण माने जानि छंती कि केबीके स्कीम हम पई केते इंपोर्टेंट जेतले रीजनल डिस्पैरिटीज कथा आछे तो निहाती भाबरे मेंस एग्जामिनेशंस पई हमरो वैल्यूएशन करिवो एट द सेम टाइम हमरो जो वाइवा राउंड अछि सेते मध्ये वैल्यूएशन करिवो। ता पूर्वरु मते जस्ट कंफर्म कर दियंतु आपण मानकू मो वॉइस एंड वीडियोटा क्लियरली विजिबल होउची तो समस्त क्लियरली देखि पारछंती मते जस्ट कंफर्म कर दियंतु जस्ट कंफर्म मी। वेरी गुड इवनिंग यशस्विनी। वॉइस आछी वॉइस रे कोनस किछि लैग आपण फील करि पारछंती किछि भी नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, चलो सो स्टार्ट करिवा। सो एई टाइप रो कंटेंट लाइक केबीके स्कीम्स एंड जो कॉलेजियम सिस्टम आपण माने जानि छंती कॉलेजियम सिस्टम रे केमति भाबरे हमरो सिलेक्शंस प्रोसेस रहिछि चीफ जस्टिस मानकर से सब कंटेंट एथरे मु प्रोवाइड करछि। आई होप आपण मानकू वीडियो टी आगु जाई कि निहाती भाबरे भल लागिवो एंड जो माने भी लाइव देखुचंती निज निज भितरे निजरो ग्रुप्स जदि व्हाट्सएप ग्रुप अछि किबा टेलीग्राम चैनल्स अछि सेतरे मैक्सिमम रु मैक्सिमम शेयर करंतु एंड यस
वीडियो टी को लाइक करिया पे जमा भूलिबेनी हमें स्टार्ट करिबा आज टॉपिक फर्स्ट टॉपिक होची फर्स्ट लाइक न्यूज होची रघुवर दास सोन इन एज ओडिशा गवर्नर ओके सो न्यूज रे कोन देला व्हाई इन न्यूज फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर रघुवर दास आपण माने जानिते या पूर्वरु ये झारखंड रे थिले एंड झारखंड रे कोउथि पे फेमस थिले ये फर्स्ट नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड से ऊपर ये फेमस थिले एंड फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर रघुवर दास वाज सोन in age 26th governor of Odisha. तो एग्जामिनेशन पे इंपोर्टेंट कौन केते तम बा केते नंबर सी गवर्नर हेले 26 गवर्नर एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस याको पूर्व जो तालपत्र थिले जस्टिस तालपत्र तो ताकर जतले लाइक से जतले ट्रांसफर हेले ओके तांको कार्यकाल परे एक माने एक्टिंग चीफ जस्टिस हिसाब रे एबे हाई कोर्ट रे अछंती विद्युत रंजन षडंगी एंड से ही like oath taking so administered the oath allegiance of the office to him. Okay, so he was first non-tribal chief minister of Jharkhand या पूर्व से chief minister थिले एंड सबुठु इंपोर्टेंट कथा होची कि आमे केतेबेले भी हमरो जो गवर्नर लिस्ट आमे केतेबेले भी चेक करि ना कि हमरो गवर्नर लिस्ट केबेरु स्टार्ट हेची नो डाउट बहुत सारा गवर्नर आज पर्यंत रही आछथि किंतु गवर्नर हिसाब रे हमरो ओडिसा रो जेते हमें 1936 पूर्व फुल फ्लेज लाइक स्टेट जेते डिक्लेयर हला ता पूर्व भी गवर्नर थिले ओके बिफोर इंडिपेंडेंस सॉरी बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमें कहिताउ सो हमें देखिबा कि किए थिले यदि हमें गवर्नर लिस्ट चेक करिबा 1936 पर हम जो गवर्नर थे सॉरी सो सर जस्टिन होबाक जेते फुल फ्लेज हमर स्टेट हला स्टेटहुड परे फर्स्ट जो जज हेतले सर जस्टिन होबाक एंड आई एम श्योर एंड यस ये आपन को प्रीलिम्स रे एथर ही ए क्वेश्चंस टे आस्तला नो डाउट सेतिर बहुत सारा कंटेंट ऐड मध्ये ही आस्तला किंतु फर्स्ट जे गवर्नर थे सर जॉन ऑस्टिन होबाक एप्रिल 1 1936 रु नेकी तांकर जेतले कार्यकाल सरला 11 अगस्त 1938 रे देन जॉर्ज टाउनसेंड बॉग एक्टिंग थिले 11th अगस्त 1938 रु नेकी 7 डिसेंबर 1938 सर जस्टिन होबाक एंड पुणी थरे से आसले 8 डिसेंबर 1938 रु नेकी मार्च 41 पर्यंत नवीन कुमार बेहरा यू आर फ्रॉम मयूरभंज यस वेरी गुड नवीन सो सर हार्थोन लुइस ये थिले अप्रैल 1941 रु 31 मार्च 1946 ओके एंड चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी सॉरी चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी ये थिले अप्रैल 1946 रु नेकी 14 अगस्त 1947 पर्यंत सो ये गोटे लिस्ट आफ्टर 1947 जेतले इंडिया इंडिपेंडेंस जो माने लाभ कला स्वाधीनता लाभ कला तापरे को लिस्ट अछि सेटा हमर एते जानिबा दरकार नै किंतु बिफोर इंडिपेंडेंस हमकु टिके क्रोनोलॉजी को मन रखिवार अछि सो दैट जितले भी एग्जामिनेशन आसी जाउची टाइप रो क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वाइज किए कहा पर थिले बा किए केते नंबर रे थिले बिफोर इंडिपेंडेंस बिकॉज़ पढिबा टाइम रे कोन हुए हमें ताको एते ध्यान देन थाउ ओके दैट्स व्हाई सेगुडा को मिस को जेते जो नेम गुडा को अछि लिस्ट अछि तो ताकू जेमति मिस आपण न करबे दैट्स व्हाई इट मु कंपाइल करछि सो दैट आपण ई मैगजीन जेते फ्री ऑफ कॉस्ट समस्त को मिलुछि ऑब्वियसली आपण माने एथरु पढि परिबे नेक्स्ट हमें देखिबा कि गवर्नर का रिलेटेड कौन सब आर्टिकल्स अछि जोटा कि आपण फ्यूचर जे कि जो माने भी पढि नांती जो माने लाइक हमर फाउंडेशन बैच रे अछंती कि जो माने एबे स्टार्ट करते पॉलिटी सेक्शंस को तांको मध्ये जानि रखिबा दरकार कि गवर्नर को पार्ट हमकु पढिबार अछि खास करी आर्टिकल्स पार्ट को तो आपण माने निहाती पढिबे कॉज एई थरो एग्जामिनेशन को जतले आपण देखुचंती एथिरे मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन सहित स्ट्रक्चरली भी गेम आसुछि माने स्ट्रक्चरल आपन को स्ट्रांग होबा पई पडिबो एट द सेम टाइम आपन को फैक्चुअल पॉइंट रे मध्ये स्ट्रांग होबा पई पडिबो सो पॉलिटी सेक्शन फैक्चुअल पॉइंट माने होची आर्टिकल्स सो आर्टिकल 153 155 टू 156 सो एइथिरे जहा किछि भी रिलेटेबल रहिछि बा हमें कहि परिबा कि लाइक डिटेल इंफॉर्मेशन मति प्रोवाइड कर दैछि आर्टिकल 55 टू 56 रे एंड आर्टिकल 63 रे कोन अछि लाइक फॉर एग्जांपल जदि मु कहि देबी आर्टिकल 163 रे कोन अछि इट स्टेट दैट देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by chief minister to aid and advise governor in the exercise of his functions except some conditions for like discretions okay so ei jo type ro articles आपण को निहाती भाबरे पढिबार अछि
बिकॉज नेशनल लेवल आर्टिकल्स तो आपण मैंने पढ़े किंतु स्टेट रु जेहेतु आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आसीबो एंड मैक्सिमम टाइम आपण पढ़ती नहीं बा कवर करती नहीं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बा जहाँ भी आप कहींपारे लैक ऑफ प्रैक्टिस हो कि लैक ऑफ टाइम हो आप जो प्रिपरेशन करें नहीं एंड जो एग्जाम हॉल ले जाकि फेस करते कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमर ओडिशा पोर्शन बा स्टेट रु आसी तो से जो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल क्वेश्चंस आपण मैंने बहुत सारा भूल करके आसुन तो से भूल जमा भी करेंगे नहीं एबे रु ही प्रैक्टिस करंतु आर्टिकल 36 सॉरी 356 कौन आर्टिकल 361 कौन फॉर एग्जांपल यदि आर्टिकल 361 में कहूची it state that the governor of Odisha shall not be answerable to any court for exercise and performance of the power and duties right move करिबा आगु को Odisha got ban marine fishing in olive ridley turtle habitations corridor so এটা आपण मानको क्लियरली देखा होची Odisha got just a minute just a minute yes so कौन हला Odisha yes. Now it is clear. So Odisha got ban marine fishing in olive ridley turtle habitations corridor. आपण माने जानी थिबे olive ridley turtle रिगार्डिंग एबे जो हैचिंग सीजन चलची तांकर लाइक आरिबाड़ जोटा हमें कहि थाउ आरिबाड़ व्हाट इज आरिबाड़ सेटा मु कहिबी आकु जेकी किंतु याकू एबे टूरिस्ट प्लेस हिसाब रे समस्त जीवा पे भल पांती किंतु पचिंग को मध्य रक्षा करंती लाइक इलीगल वे रे तांको जो मारी दिया जाय बा तांको नै के चालान करा जाय ट्रैफिकिंग रे मैक्सिमम यूज करा जाय तो ताकू अटकिया पे ई सब ओडिशा गवर्नमेंट पदक्षेप नहीं जोटा कि वर्ष को वर्ष से बिकज प्रति वर्ष ये अंडा देवाई आसती सो ऑलिव रिडले टर्टल आम खास कौन देखा बिकज वाई न्यूज सो कहीं न्यूज रे थिला ओडिशा गवर्नमेंट क्लेम्ड ए 7 month long prohibition on sea fishing activities तो 7 मास गोटे लॉन्ग इलोंगेटेड फॉर्मेट रे से बैन लगे within 20 kilometer of coast mouth of rivers like Dhamra देवी ऋषिकुल्या आपण मानको एटा भी जानि रखियो दरकार कि को रिवर से कौन कौन सब रिवर एथिरे अछि इंक्लूडेड सो रिवर लाइक धामरा देवी एंड ऋषिकुल्या to ensure the safety of marine animals like olive ridley turtles during their mating and breeding season right mating and breeding seasons from November 1 to May 31 with the provisions of Odisha Marine Fishing Regulation Act OMFRA in 1982 and Wildlife Protection Act 1972 to ensure effective patrolling, 61 non-shore camp and 5 offshore camp have been set up in state for wildlife divisions of Bhadrak, Rajnagar, Puri and Barampur. एरिया रे सब पदक्षेप नियायछि सो ड्यूरिंग द बैन कोन हबो जदि तांको बैन कर दिया गेला 7 मंथ्स जो फिशरमैन माने सेठी निर्भर करथले तांकर कोन हबो so it देखिवा during the ban more than 10,600 fishermen or fishermen families will be affected due to fishing ban जेहेतु सेमानकर जीवन जीविका ऊपर निर्भर करती फिशिंग ऊपर ही ओके फिश जो सेमाने माछ धरिबा ऊपर ही निर्भर करती जदि तांको बैन कर दिया ताले कोन हो 1500 टू ईच ऑफ द अफेक्टेड फिशरमैन फैमिली समस्त को 15,500 लेखाए समस्त को प्रोवाइड करा जिवो ओके असिस्टेंट सो दैट सेमाने तांकर भरण पोषण एई 7 मास भितर जेमति करि परबे प्रतिटा फैमिली को फिशरमैन फैमिली को देन हम जदि देखिबा टेक्निकली कि को जगह रे एक्चुअली हमर देखा जाय ए जो कइच गुडा को आसंती किबा टर्टल्स गुडा को आसंती लाइक ऑलिव रिडले टर्टल्स को जगह रे हमको मैक्सिमम ऑलिव रिडले टर्टल्स देखिया पे मिले तो ये होची धामरा पारादीप ऋषिकुल्या मुहाण तो देखि पारते ऑलिव रिडले टर्टल नेस्टिंग बीच गहिरमता sorry पॉस्को पोर्ट साइट्स एंड मास नेस्टिंग बीच लाइक ऋषिकुल्या एई सब एरिया रे मास से माने अंडा दान करथांती राइट समस्त को सुना होची समस्ते सुनुचंती मन देखि प्रॉपर्ली ऑडिबल कंटिन्यू करिवा
So about this turtle, the turtles are carnivorous. ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି carnivorous, right? And get their names from their olive colored like carpex. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠି portion ଟା ରହିଛି ସେଇ portions ଟା olive color, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ olive oil ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି olive ସେଇ color ହିଁ. And they are best known for their unique mass nesting called arivado. Now what is arivado? So mass nesting at a time କରନ୍ତି, that is known as arivado. Okay, mass nesting at a time କରନ୍ତି, that is known as arivado. Then threat and protections measure, कौन कौन सब threat and protection measure निया So olive ridley faces serious threats across their migratory routes, habitat and nesting beach, and due to human activities, development and exploitation of nesting beach for ports and tourist centers. So here you can see the difference between human height and olive ridley height. And तार weight gap ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି female କେତେ weight ଥାଏ. For extra knowledge ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି କଣ କଣ ସବୁ ଥାଏ extra features olive ridley ରେ. Then Wildlife Protection Act रे ताकू 1970 हिसाब रे ये Schedule 1 category अंडर जाउची. IUCN रो जो red data list अछि ये vulnerable category जाउची, and CITES Appendix 1 category रे जाउची. Okay, बुझी पाले समझते. However, the most severe threat they face is the accidental killing of adult turtles through entanglement in the troll nets. Just imagine ଯେତେବେଳେ fishermen ମାନେ ଯାଉଥିବେ ट्रॉलर्स ଧରିକି, ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଉ ନେଟ୍, ଏଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଟ୍ ଥାଏ. एंड प्लास्टिक बैन पे आपण देखिथे प्रीवियस इयर मध्ये आपण रिसेंटली लाइक ओपीएससी प्रीलिम्स रे मध्ये क्वेश्चन आस्तला कि ए जो नेट गुड़िक अच्छी ए नेट गुड़िक मैंने फसी जाती, तो कौन हुए तापर तांकर लाइक डेथ हो जाए, बिकज सेठू आ बाहर मुस्किल हो जाए. एंड गिल्स नेट ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फिशिंग ड्यू टू देयर मेटिंग सीजन. ए जो मेटिंग टाइम पीरियड अच्छी से टाइम पीरियड जदि ट्रॉलर नहीं जाउछंती फिशरमैन माने, तो सेतिर से माने फसी जाती एंड तांकर जीवन चल जाए. सो टू रिड्यूस एक्सीडेंटल किलिंग इन इंडिया, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ट्रोल्स to use turtle excluder devices, okay, TEDs, so that कौन हबो ना नेट रो ओपनिंग पार्ट गोटे थिबो, जदी भी somehow ओपनिंग पार्ट तो अछि, जदी somehow जदी नेट रे फसी भी गला तार एग्जिट पार्ट गोटे रखिबा निहाती दरकार अकॉर्डिंग टू ओडिशा गवर्नमेंट. So a net specially designed with an exit cover which allow the turtle to escape while retaining the catch. Okay, बुझि पाले समझते. Clear everyone? Just गोटे confirmation दे दियंतु, then आमे आगु बढ़िबा. Clear? Give me a thumbs up or any kind of symbol so that ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, and point ରେ କିଛି ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିପିଟ୍ ପାଇଁ ପଚାରି ପାରିବେ. ଓକେ, or else ଆମେ next news ku jiba. Next news hochi BrahMos test success pave way for inductions in navy. Okay, BrahMos upar janiba. Why news? Because India in November successfully test fired extended range cruise missiles BrahMos from warship in Bay of Bengal. Okay, and amid concern over the presence of three Chinese warships जो भी चालची कॉन्फ्लिक्ट पाई, सो ताकू लक्ष्य करके हम जो टेस्ट फायर करते सी सक्सेसफुल ए सबमरीन एंड ए रिसर्च वेसल इन द इंडियन ओशन रीजन. Indian Ocean regions. So the air-launched BrahMos missile was test fired from Sukhoi or Su-30 MKI fighter jet developed as a part of Indo-Russian joint venture BrahMos. आपण मानक भितर बहुत जन थे जो मानक कि ब्रह्मोस रो फुल फॉर्म जाना नथबो कि ब्रह्मोस जो हेची जो एयरक्राफ्ट हेची बा जेट हेची तार नाम कोठु आसी. सो ब्रह्मोस फ्रॉम BRA जो हेची BRAS from Brahmaputra river and India ro, and Moksava river of Russia. ए दीटा को मिसे कि ब्रह्मोस हेची, and is a two-stage missile. Two-stage missile with solid propellant, booster engines, and second stage liquid ramjet.
second stage ଟା liquid and first stage ଟା ହଉଛି solid propellant that takes the missile closer to match 3 speed in cruise phase. Now या previous video रे बा previous class रे ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖି ନେବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ solve କରି ସାରିଛି what is cruise missile and what is normal missiles ଯୋଉଟା ଅଛି cruise missile କଣ and ballistic missiles. Yes, exactly, ballistic missile ଆଉ cruise missile ଭିତରେ ଫରକ କଣ? So the strike range of the 9-meter long missile has been extended from 290 km to 450 km plus after India's full membership to Missile Technology Control Regime MTCR that remove caps on the range of BrahMos cruise missile. So sie basically ताको cover माने control करथिले जोटा कि एबे cap टाको remove कर देछन्ती जो range रे sie जिबा कथा sie एबे full fledged range रे जाई परिबो तो ता पूर्वरु मु गोटे एठी आपन मानु कहि रखिया पय चाहे एबे आमे या ऊपर जो मेंस रो क्वेश्चन अछि से ऊपर आमे डिस्कस करिया मेंस रे एमती आसे कि व्हाट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एमटीसीआर कोन बा या विषय आपन डिटेल लिखंतु सो इट इज मल्टी लैटरल कॉन्शियस ओके कंसेनस based grouping of 35 member countries who are voluntarily committed to non-proliferations of missiles capable of carrying chemicals, biological and nuclear weapons of mass destructions, and it controls रेगुलर ए क्लास टा रेगुलर आसेनी भगवान ये मंथ रे गोटे टाइम आसे मंथली करंट अफेयर क्लास ये तो रेगुलर आसेनी हाँ बट आफ्टर द क्लास अपन मन को मंडे सुधा यार लाइक फुल फ्लेज मैगजीन टा फ्री ऑफ कॉस्ट रे ray.academy साइट रे अवेलेबल है जो जोत्री को अपन माने डाउनलोड करि परबे ये जो मैगजीन को so it control that too free of cost okay so it controls the export of technologies and materials involved in ballistic missile systems and unnamed unmanned aerial vehicles particularly capable for carrying nuclear warheads of above 500 kilometer payload for more than 300 kilometers and this is a non-treaty associations of members country with certain guidelines about the information sharing national control laws and export policies for missile systems and a rule-based regulations mechanism to limit the transfer of such crucial technology of this missile system. ये तो थिला तारो डिटेल व्हाट इज एमटीसीआर कोन ओके एंड तापर हम देखिबा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इंपोर्टेंट फैक्ट कोन रछि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1987 by G7 countries. Now G20 विषय तो आपण माने फुल फ्लेज सुनते बिकॉज़ ओडिसा रे मध्ये ये हितला किंतु G7 विषय रे जानि रखिया निहाती दरकार यूएसए यूके फ्रांस जर्मनी कनाडा इटली एंड जापान G7 country. So to check the spread of unmanned delivery systems capable of carrying nuclear weapons of above 500 kilometers, sorry 500 kgs for more than 300 kilometers in 1992 ये basically ताको limit size करे and it was extended for all type of weapons of mass destructions. Now it has 35 full members including India मध्ये तार member अछि मन रखिथिबे and 4 non adherent members like Israel, okay, Macedonia, Romania and Slovakia एमाने तारो नॉन adherent member असुती so China is not a member of this regime मन रखिथिबे ये गोटे important because exam रे आपन को आसी जाई पारे कि China यार member कि नहीं right China is not the member of China is not the member of uh, like MTCR okay just a minute. So, these efforts of non-proliferations of ballistic missile systems had further been strengthened by the International Code of Conduct Against Ballistic Missiles Proliferations, also known as Hague Code of Conduct. So, যেতବେଳେ ଆସିବ Hague Code of Conduct by HCOC,
which was established on 25th November 2002 and as an arrangement or to prevent proliferations of ballistic missiles with 136 UN members country including India. So India has joined MTCR as a full member and also agreed to join the Hague Code of Conduct, made it a bolster its position as a responsible nuclear state. तो इंडिया एबे तारो मेंबर अछि and that's why से तांकर जो गैप अछि जो लाइक जेतिकी से माने प्रोवाइड करथि ताटू से एक्सटेंड कर दैछंती. Okay, so India can sell its missile to other non-members countries with like comparative ease. Examples: supersonic cruise missile BrahMos to Vietnam, right? तापर देखिबा about BrahMos. BrahMos विषय आउ टिके किछि जानिबा. BrahMos कोन? So it is a supersonic cruise missile. ये गोटे कोन? Supersonic cruise missile. It is a joint venture between Defense Research and Development Organizations DRDO of India and NPOM of Russia. Okay, it named after the river Brahmaputra and Moksava. Features kon hoichi, it is a two-stage missile with solid propellant engine in the first stage and liquid ramjet in second. And tapore ame jodi dekhiba ki anti-ship and land attack roles here rohichi. BrahMos is one of the fastest cruise missile currently operationally deployed with the speed of Mach 2.8, which is nearly 3 times more than the speed of sound. Sound taru 3 guna adhiko. And it has a launch weight of 2200 to 3000 kilograms. Yaro jo weight rochi 2200 to 3000 kilogram rochi. It operates on the fire and forget. Okay, fire and forget माने सिए तारो लक्ष्य स्थल निजे बाछि देई पारिबो. Once ये फायर हेले कोनसी जगह जदि फायर हो सिए तारो ऑटोमेटिकली नेविगेट करकी से ऑब्जेक्ट पर्यंत पहुंची जिवो. Principle like adapting varieties of flights on its way to the target. Like BrahMos is equipped with stealth technology designed to make it less visible to radar. तो radar ये बहुत ही कम visibility पाइबो बा कम माने आराम से ये जाई परिबो and other detections method. तो detect करिबाटा याकू टिके मुश्किल हेई पारे किंतु लाइक इम्पॉसिबल नुहे. ओके किंतु ये बहुत सा जगह रे ये पास करे जाय. ओके radar सामना को न आसिकी. Then आमे जिबा next rupees 300 crore project in Kalahandi. କାହିଁକି जो सिचुएशन असला 300 crore प्रोजेक्ट बिकॉज कलाहांडी रे डेवलपमेंट चलची आमे पूर्वरु जानचे कलाहांडी को एरिया अंडर जाउची केबीके अंडर रे जाउची. व्हाट इज केबीके आमे आगु जानिबा. सो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनवील्ड प्रोजेक्ट वर्थ ओवर rupees 300 crore for Kalahandi during his visit to the district and he inaugurated the Shahid Rendo Majhi Medical College जोटा कि मु पूर्वरु मध्ये कवर करची रेंदो माझी कॉलेज and hospital at Bhavanipatna, launch transport service under the Lakshmi schemes जोटा बस सर्विस जो रही. And then आमे जानिबा मेंस कंटेंट कोन रही केबीके स्कीम्स रो. व्हाट इज केबीके? केबीके माने होची कलाहांडी बलांगीर एंड कोरापुट बाकी सेतिक रे ये लिमिटेड नाही. So the districts of southern and western Odisha are regarded as the most backward region by the planning commissions, which redesignated some of these districts as KBK, Kalahandi, Balangir, and Koraput. During 1992 to 93, the three large districts were reorganized into 8 districts, which is Malkangiri, Koraput, Nabrangpur, Kalahandi, Raigada, Nuapada, Balangir, and Sonpur. So एथिरे आपण माने मैप टी को देखि पाथबे केबीके जो योजना जो आपनकर लागबे को जगह रे लागबे. And these 8 districts comprise like 14 subdivisions, 37 tahsils, 80 CD blocks, and 1,437 gram panchayat and 12,293 villages. So the 8 districts, which from KBK regions account for 19.72% of the population and occupy over 30.59% of geographical area of the state. Around 90% of the people of this region still live in village. Still live in village, right? So female literacy is only 24.72%. ओके एगुड़ा को कंटेंट आपन को मेंस निहाती भाबरे हेल्प करिवो. ए कंटेंट को मार्क करथिबे. सो द केबीके डिस्ट्रिक्ट हैज बीन हिस्टोरिकली रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस. Like severe droughts and flood also often visit these regions, and some areas
in quick successions, therefore the backwardness of this region is multi-faced. बहुत सारा कारण अछि, बहुत सारा reason अछि जो area काहे कि backward अछि. Backward एइथिପାଇଁ अछि because of tribal backwardness, lack of educations, okay, communications. Hill area are backwardness, lack of communications, continuity पढ़ी परिबो. Backwardness due to severe natural calamities, okay, apathy of state and central government towards these regions. That's why a region टी backward ହେଇକି ଅଛି ସବୁରେ ନା proper connectivity ଅଛି जोटा कि ଏବେ government ଚାହୁଁଛନ୍ତି government को ପୂର୍ବରୁ ଏଇ step ନେଇଯିବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ work ଚାଲୁଛି ୟା ଉପରେ connectivity को strong କରାଉଛି including the Lakshmi bus schemes जो लक्ष्मी बस government चलाइଛନ୍ତି and ତା ଛଡା ଏଠି regional disparity ର ବି question ହେଇପାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ mains ରେ questions face କରିବେ like previous year question ଯଦି ଦେଖିଥିବେ from regional disparities a regional disparity questions ଆପଣ ମାନେ ଏଇଥିରୁ pick କରିପାରିବେ ଏଇ ଯାହା ବି ସବୁ point ଅଛି to justify the regional disparities and all. Then ଆମେ ଦେଖିବା characteristic of uh, distressed migrant of in KBK regions. So who are distressed migrant in KBK regions? So distressed migrants migration is a prevalent coping strategy in KBK regions during the agricultural lead period. Okay. Yes. Hello, Ritesh. So these groups face challenges such as caste-based discriminations, chronic poverty, landlessness, low literacy and skills. खास कर जेतले आपण मेंस आंसर राइटिंग करूछंती तले each and every point टी जोटा मु मेंशन करची आई होप आपण मानकू एंड आई एम श्योर आपण मानकू क्विकली जो मैगजीन टे मिली जिवो एंड एई मैगजीन टा मिलला परे आपण माने लाइक मंडे सुधा आपनकू एटा अपडेट हे जिवो साइट रे सेटू जाके डाउनलोड करनेबे एंड सेटू जाके जो माने भी एथरो मेंस दउछंती एपीआर करछंती करिवे से माने एथिरु कंटेंट निजर प्रिपेयर करनियंतु बिकॉज एथिरे बहुत सब कंटेंट मु मेंशन करछि एंड पूर्वरु मध्य आपनकर आर्ट एंड कल्चर पार्ट ऑफ ओडिशा फ्रॉम जनवरी मु मेंशन करी करी आछि आपण माने सेटू इनक्लूड करि परबे ए जो दृष्टिकोण मैगजीन ओके सो सब किछि कंटेंट मु ट्राई करछि ओडिशा रिलेटेड जते भी कंटेंट अछि मेंस रिगार्डिंग ताकू मु कवर अप कर देछि जो माने मेंस एथर अपियर करछंती जाई कि ए जो मैगजीन को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट रे एथिरु नोट डाउन करंतु immediately. So why distress migration occurs एथिर तार रीजंस मु प्रोवाइड करछि तो ताकू जदी मु एक्सटेंडेड वे रे जदी बुझेबी ताले वीडियो बहुत ही लंबा आइजबो बा क्लास लंबा आइजबो तो ताकू मु आपण मान को पई छाडी दउछि एइठू कवर करिवे ओके हमें मूव करिवा आगो को जस्टिस Chakradhari Saran Singh, Chakradhari Saran Singh, recommended as Odisha Chief Justice, Odisha High Court Chief Justice ପାଇଁ ୟାକୁ recommend କରାଯାଇଛି. So କିଏ recommend କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା. So the Supreme Court, why news? The Supreme Court Collegium has recommended the name of Justice Chakradhari Saran Singh. Supreme Court Collegium. ଏଠି ଗୋଟେ question ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ mind କୁ what is collegium systems? So the senior most judge of Patna High Court as the Chief Justice of Odisha High Court, the collegium headed by Supreme Court Chief Justice T.Y. Chandrachud, जी कि हमर CJI अछंती, on Thursday resolved the recommend the appointment of Chief Justice as Chief Justice of recommend the appointment of Justice Singh as the Chief Justice of Odisha High Court. से recommend करछंती बा collegium recommend करछि. So एटू जो question असला clear करछि what is collegium system and how did it evolve. So it is the system of appointment and transfer judge that has evolved through judgment of Supreme Court and not an act of parliament or by provision of the constitutions. Okay, एथिरे constitution में किछि mention नहीं किंबा parliamentary act किछि नहीं एथिरे mention करछि like judgment of the Supreme Court रो एइता एतला. So evolutions of systems like first judge case रे 1981 जो आसला सेतिरे collegium system रो जो धारणा ये start हेतला. Second judge case आसला 1993 रे. Then third judge case 1998 रे. Supreme Court on the President's reference Article 143 expanded the collegium to a five-member body comprising the CJI and four of his senior most colleagues. ताको जो चारि जण senior most colleague को सहित CJI भी included रहिबे collegium system रे okay selection procedure ପାଇଁ. So how heads sorry who heads the collegium system? किए याकू प्रतिनिधित्व करंती बा किए यार हेड who heads the collegium system. So the Supreme Court collegium is headed by CJI or Chief Justice of India and comprises of four other senior most judge of High Court. A High Court collegium is led by
the incumbent Chief Justice and two other senior most judge of the court. Judge of the higher judiciary are appointed only through the collegium system, and the government has role only after the names have been decided by the collegium. What are the procedure of judicial appointment? Like for CJI, the President of India appoints the CJI and the other Chief Justice, other Supreme Court judges. As far as the CJI is concerned, the outgoing CJI recommends his successors. In practice, it has been strictly by seniority ever since in the separations controversies of 1970s. For Supreme Court judge, like CJI ପାଇଁ जो provision କହିଲେ ଏବେ Supreme Court judge ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା for other judges like of the Supreme Court, the proposal is initiated by CJI. ଏ proposal ଟା କିଏ ଦିଏ? CJI ଦିଅନ୍ତି. So CJI consult the rest of the collegium member as well as the senior most judge of the court hailing from the high court to which recommended persons belong. যদি ଆମେ ଦେଖିବା for chief justice of high court, so chief justice of high court ରେ collegium system ରେ କେମିତି selections କରାଯାଏ? Like the chief justice of high court is appointed as per the policy of having chief justice from outside and respective state. The collegium takes a call on elevations. High court judges are recommended by the collegium comprising the CJI and two senior most judges. The proposal, however, is initiated by outgoing Chief Justice of High Court concerned in the consultations with two senior most colleagues. Okay. So येଥିଲା process केमती कौन selections करा जाए. Now come to next current affair. Leverage potential cost advantage in semiconductor sector in Odisha. CM. Okay. So why news? Because Chief Minister Navin Patnaik urged investors in the semiconductor sector, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି semiconductor sector ଯୋଉମାନେ ବି belong କରୁଛନ୍ତି, to leverage the potential and cost advantages provided by Odisha to create a vibrant semiconductor ecosystem in the state. ସେ invite କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ବି semiconductor ଯୋଉ like manufacturers ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ invite କରୁଛନ୍ତି କିଏ? Chief Justice Navin Patnaik, Chief Minister Navin Patnaik. Okay, and ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଉ like manufacture କରନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବନାନ୍ତୁ ଓଡିଶାକୁ ଏଜ ହବ ବନାନ୍ତୁ because recently ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଓଡିଶା for silicon 2023 ଯୋଉ ମାନେ like event ହେଇଛି addressing Odisha for silicon 2023 ଏଥିରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି like signing of MOU with Indian Electronics and Semiconductor Associations, and then signing of MOU with like Synops, signing MOU with Electronic and Computer Softwares Export Promotions Council IESC, and launching of IESA Odisha chapters. Okay, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା कि ओडिशा सेमीकंडक्टर एंड फैबलेस पॉलिसी 2023 रिसेंटली गोटे पॉलिसी मध्ये आस्था ओडिशा गवर्नमेंट तरफ विजन कौन थिला द ओडिशा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैबलेस पॉलिसी envisions developing an end-to-end semiconductor ecosystem in Odisha. The policy aspires to contribute to the nation semiconductor ecosystem. ये specifically मेंस ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ content ମୁଁ provide କରିଛି ये specifically मेंस ପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଥର मेंस ପାଇଁ appear କରୁଛନ୍ତି ବା मेंस ରେ appear କରୁଛନ୍ତି. So development objectives and aims to transform Odisha into leading centers of semiconductor design and manufacturing, a startup hub for semiconductor R&D or research and development and design companies, and primary repository of the semiconductor design talent in the country. So objective kon rahichi to create semiconductor design and manufacturing ecosystem in Odisha. Okay, to create state of the art infrastructure with cutting edge design and testings, to build conducive fabulous ecosystems. एटी मु shortly खाली mention करूची because detail ले अपन मन निजे मध्य पढ़ी दे परिबे unnecessary video को लंबा हमें करिबा नहीं. So fifth point, to create pipelines of industry ready talent pool by fostering linkage between industry and economy. Okay, then sixth and seventh point रे मध्ये लिखा है किंतु आपनको माइंड रे गोटे डाउट आसलो कि व्हाट इज फैब and what is non-fab or fabless. So fab or fabrication facility, like a fab or fabrication facility is a semiconductor manufacturing plant where the actual productions of
integrated circuit takes place, जो थे कि actual productions होते हैं, and fabs are equipped with the advanced machineries and technology to create semiconductor device on silicon wafers, okay, through a complex processes. যদি আমি দেখিবা fabulous semiconductor কোন fabulous semiconductor companies on the other hand do not own or operate their own manufacturing facility, जोटा fab तला निजर manufacturing facility थिबो किंतु एमानकर जो fabulous निजर manufacturing facility नथबो, instead they focus on the design and development of semiconductor products. Okay, एतिकी होची basic फरक. So then Odisha, a growing state in India, କାହିଁକି ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି investment ଆସୁଛି, ଗୋଟେ clear glimpse ଗୋଟେ ମୁଁ provide କରୁଛି, detail ରେ ମୁଁ ଯାଉନି, ଗୋଟେ important point ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ share କରୁଛି. Odisha is strategically located in the east of India as a gateway to the Asian regions. Asian region ସହିତ ଆମର ଇଏ gateway ଭଳିଆ କାମ କରେ. Look East policy ରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଖାସା like place ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର. So with ease access to 50% of world economy and 100 cities with a population of over 1 million, the state's economy has been growing at 10.4%. The state has robust infrastructure, including 1.6 in industrial estates and 1,25,000 acres of industry-ready land. It has a well-developed railway network spanning over 2,500 kilometers, and Odisha has a surplus of power with an installed capacity of more than. Yes, Millie, very good evening. Quickly आपको share करंतु वीडियो को जो मैंने भी लाइक करना थी आगो वीडियो रे लाइक करंतु जाइकी. So Odisha has surplus of power with a installed capacity because आपण जेतेरु जेते share करिवे लाइक करिवे वीडियो को सेतेरु सेते कोन हबो ना मु मध्ये मोटिवेटेड फील हेबी कि आपण पई जो सब कंटेंट आपण पई नहीं आसे से कंटेंट आपण को हेल्पफुल रहबो. ओके, सो जोक्स अपार्ट कि आपण ताको सीरियसली भी नहीं पारंती कि न भी नहीं पारंती. ओके, सो हमें जीवा कंटेंट को पुनः थरे बैक करबा. सो एठी मु क्लियरली मेंशन कर देछि कौन पाई सब ओडिशा को एते प्राधान्य देबा दरकार. ओडिशा रे कौन सब अछि लाइक ब्राह्मणी ठारो आरंभ करी बैतरणी सुवर्णरेखा बुढ़ाबळंग ऋषिकुल्या बंशधारा नागावली साळंदी इंद्रावती एई सब रिवर हम पाखरे अछि. तो ए रिवर द्वारा कौन सब डेवलपमेंटल वर्क करा जाई पारिबो तार गोटे क्लियर पिक्चर मु दे देछि एठी. तो आपण माने एई कंटेंट रु पढी नेबे परे जाई. देन हमें जीवा कोरिया keen to invest in Odisha. Korea keen to invest in Odisha. Why news? Because as the Odisha government sets its eye on converting investment intent received during Make in Odisha 2022 into reality, Team Korea, a delegations comprising a representative from the embassy and industry associations, has evinced interest in promoting economic cooperation with the state. तांकर मूल लक्ष्य अछि कि ओडिशा सहित से माने डील करिवे बिकॉज़ ओडिशा रे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अछि. सो एक्सप्रेसिंग confidence over future trades, ties up, and commercial counselor at the Korean embassies like Sung Jung, okay, CHO, Sung Jung, CHO said investors are investors are keenly watching Odisha's shifting focus on IT, then renewable and decarbonizations, electric vehicles, aviations, and metal ancillaries. Okay, and from Far East, like the team from Korea will visit industrial corridor in state, and the team is keenly watching Odisha's focus on the sectors like IT and renewable energies. Odisha export investment is diverse. Okay, sectors like auto parts and petro products. That's why Odisha important अछि. And Odisha is first choice in look east policy. काहेकि ओडिशा फर्स्ट चॉइस रही समस्तनकर लुक ईस्ट पॉलिसी रे डेवलपमेंटल केस रे खास करी एठी मु मेंशन कर देछि लाइक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर हियर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर हियर, मिनरल वेल्थ अछि, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल अछि, वी हैव कोस्टल एरिया जोतरे कि हमकु विंड एनर्जी लाइक वाटर एनर्जी सब किछि अवेलेबल हे जिवो. पोर्ट एंड वाटरवेज पोर्ट भी हम पाखरे अछि लाइक धामरा अछि, पारादीप अछि. सो रोड एंड रेल कनेक्टिविटी हम पाखरे अछि. आउ कोन अछि strategic importance कोन अछि geostrophic locations like Odisha's proximity to Bay of Bengal regions. Bay of Bengal regions पाखरे हम जो connections अछि हम internationally मध्य grow करि परिबा. Then strategic partnerships, so investment incentives like government initiatives and skill development, जो program चलछि, and culture and people to people exchange,
cultural diplomacies like Odisha rich in cultural heritage, that's why, and tourism promotion. The state promotes the tourism, attracting visitors and enhancing cultural and economic linkage. So then challenges and mitigations. कौन सब challenges like infrastructure नहीं कि environmental concerns रू हमर जो challenges ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ mitigate କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି mention ଅଛି and ଖାସ କରି ଏଇ ଯୋଉ content ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ mains ପାଇଁ ये important ରହିବ तो mains जो माने भी ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ note down କରିନେବେ next ଯିବା ଆମେ ओडिशा सीएम नवीन facilities sorry felicitates Asian Para Games medalist Pramod and सौंदर्य okay so important कौन है कि हमें जानिबा chief minister नवीन पटनायक felicited Asian Para Games medalist shuttler Pramod Bhagat and blind chess player Saundarya Kumar Pradhan with cash award while Pramod received 2 crores, Saundarya ko मिलता 1.5 crores. So Pramod won 3 medals in para badminton, including a gold and 2 bronze. And similarly, Saundarya won a rapid V1B1 chess team event like gold medal and a silver in the same category. Okay. So then हमें next ଯିବା कि ओडिशा rise as shining example for sport infrastructure आपण माने जानि छथि कि ओडिशा रे बे खेल को बहुत सारा प्राधान्य दिया जाउची काहे कि दिया जाउची कोन सब एई जो लास्ट 5 to 10 years भितर ओडिशा रो गेमिंग रिगार्डिंग बा स्पोर्ट्स रिगार्डिंग कोन सब हेई आसी तार गोटे क्लियर पिक्चर मोटे प्रोवाइड करची फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन सो strategic investment like Kalinga stadium ru apu neki like Kalinga lancers जो अच्छी हमें मैक्सिमम हमें स्पॉन्सर करूछु गेम को हॉकी खास करी सो मॉडर्न एमिनिटीज स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल स्कीम्स सक्सेसफुल इवेंट होस्टिंग्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018 okay then Odisha successfully हॉकी वर्ल्ड कप 2000 जो लास्ट ईयर जितला 22 Odisha successfully hosting the supported by the hockey promotion schemes. Then recognitions received. Okay. Then focus on hockey development. High performance centers established hockey, Odisha hockey high performance centers. Collaboration with Hockey India. Then support of multi sports like sports for all and athletics and football grassroots sports developmental schemes infrastructure beyond Bhubaneswar like districts level facilities provide କରୁଛି district sports hubs create କରୁଛି government and खेल महाकुंभ जो रही से हिसाब रे सेठी बहुत सारा स्पोर्ट्स रे लाइक अट्रैक्ट करा जाउची यूथ माननकू सो दैट मैक्सिमम नाम ही पारू स्टेट रो एंड समस्त फिट रही परंतु सो एतिर गोटे क्लियर पिक्चर मु प्रोवाइड करची जोटा की हेल्प करिव आपनकर मेंस रे आंसर राइटिंग रे कि ओडिसा गेमिंग रिगार्डिंग बा स्पोर्ट्स रिगार्डिंग केते सब डेवलप करि आसी आज पर्यंत then next time jiba Odisha society sign MOU with Andhra Pradesh Bihar farms for match marketing so why in news because the Odisha rural development and marketing society ormas an independent society under Panchayati Raj and drinking water department ye kahan under achi Panchayati Raj and drinking water department under achi ormas signed two MOU with Vijayanagar Biotech of Andhra Pradesh and Dehat of Patna, Bihar. So for marketing the maize product by the farmers of Nabarangpur. So buyer and seller meet under the Mukhyamantri Makka Mission. So Mukhyamantri Makka Missions regarding mo previous मोर जो magazine अच्छी से publish कर सची videos रे भी मु कहि सची मुख्यमंत्री मक्का मिशंस then ଆମେ ଯିବା next CM launches Amo Odisha Navin Odisha program in Malkanagiri. So why news Chief Minister Navin Patnaik inaugurates Amo Odisha Navin Odisha. जो सर जो टाइप रो क्वेश्चंस आसुची ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम रे सेमिति आणंतु पूरा स्पेसिफिकली तो अछि इवन जदि आपण देखिबे कि लास्ट ईयर जदि आपण देखिबे लास्ट जो हमरो प्रीलिम्स जाइतला से प्रीलिम्स रे कोन हिची ना एग्जैक्टली हमरो दृष्टिकोण रु लाइक जदि आपण देखिबे महेंद्रगिरी कथा हो फावर कथा हो ई दृष्टिकोण रु ही आछि तो स्पेसिफिकली ये जाउची सीमो हाया ओके तो ये पूरा पूरी स्पेसिफिक अछि एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल एंड फैक्चुअल सब कंटेंट एथि मु प्रोवाइड करछि जोथरे कि मैक्सिमम रो मैक्सिमम आपनकर ओडिसा क्वेश्चंस आपन टच करि परिबे एंड सेथरे मास्टरी करि कि गोटे भलो आंसर दे परिबे ओके तो एथिरे क्वालिटी रे कोनसी भी कॉम्प्रोमाइज करिनि मज पर्यंत so under the Amo Odisha Navin Odisha schemes gram panchayat have been empowered to undertake the various work worth of
up to 10 lakhs, and this includes the preservations and protection of local places of worships, historical sites, and other essential infrastructure needs. The objective is to bridge the gap in education infrastructure, provide internet connectivity, and establish playground, science parks, and training facilities. The scheme also aims to develop work hubs like skill center, the banking facilities to support rural entrepreneurship with a special focus on women. Now, promotion in Jagannath culture ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ part ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର. So ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା scheme seeks to preserve and protect this culture heritage, ensuring the continuity for future generation. It recognizes the significance of local place of worship, historical sites, and promotions of the Jagannath traditions. The schemes aligns with Odisha's commitment to preserving the cultural identity and showcasing it to world. Implementations through Panchayat Raj institutions at the grassroots level, and implementation of Amo Odisha, Navin Odisha schemes will be carried out by Panchayat Raj institutions. These institutions will play a pivotal role by important role to executing the various work identified under the schemes, and their involvement ensure community participations, local governance, and effective utilizations of resources, making the scheme more inclusive and impactful. Now, next ଆମେ ଯିବା tactical pralay ready for deployment along borders. ओडिशा करंट अफेयर रे किछि भी क्वेश्चन रैंडमली आछी बहुत पढ़िया पई भी पड़िबो किछि भी क्वेश्चन सी गोटे भी किछि भी क्वेश्चन बा करंट अफेयर रैंडमली आसी नथा जेते पर्यंत तार परफेक्ट गोटे स्ट्रेटजी प्लान न बना जाए ओके जेते बेले आपण कोनोसी भी करंट अफेयर पढुछंती ताकू देखिबार शैली अलगा थाए जदि पॉसिबल ताले मु गोटे करंट अफेयर सेक्शंस केमती आपण चूज करबे करंट अफेयर सेक्शन को तार गोटे स्पेशल एडिशन वीडियो मु बाहर करबी बट ता पूर्व जानी थांतु कोनोसी भी करंट अफेयर जेते आपण चूज करछंती बा पढुछंती रैंडमली ताकू पढंतु नै गोटे एंगल अछि करंट अफेयर चूज करबार सोशल डिफेंस स्कीम्स को थारु स्टार्ट करिकी जो लाइक बहुत सारा लाइक पार्ट अच्छी सोशल जस्टिस पार्ट अच्छी आपनकर वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटीज अच्छी आपन सेही थ्रू रे ही करंट अफेयर को सिलेक्शन करया पे पड़िबो एंड सेही थ्रू ही क्वेश्चन आसे जोटा सिलेक्टिव प्रोवाइड करथले सेही थ्रू ही करंट अफेयर क्वेश्चन खास कर ओडिसा कथा हम कहूची बाकी कथा कहूनी नेशनल लेवल ओडिसा क्वेश्चन सेमती ही आसीतिला ओके आपण प्रीलिम्स रे देखि पारबे एई मैगजीन ही आस्तला बिकॉज़ ता पूर्वरु कोनसी भी कंटेंट अवेलेबल नथिला ओडिसा रे आपण ओडिसा मैगजीन फॉर ओएस एग्जामिनेशन आपण ओडिया जो करंट अफेयर पाइबा पे ओके तो स्पेसिफिकली एइथरे ही निर्भर करंतु डिपेंड करंतु यार जो मैगजीन को बा जोटा मु प्रिपेयर करची या पर ही सोली निर्भर करिकी आपण भलो मार्क गेन करि परबे ओके सो developed by Defense Research and Development Organization से का द्वारा प्रलय ये होची ओडिशा कोस्ट रे सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल developed by Defense of Technologies used in Prithvi Defense Vehicle PDV interceptor missile and Prahar tactical missiles was test fired in full operational configurations from Abdul Kalam Island जोटा कि पूर्व नाम थिला व्हीलर आइलैंड. Now come to next current affair. Chief Minister inaugurates the Odisha Table Tennis Academy. Why news? Because CM inaugurates the Odisha Table Tennis Academy here. He also declared open the 29th State Table Tennis Championship 2023. And Naveen also announced that 33 table tennis centers are being established across the indoor halls in the state. Pura state सारा रे 33 table tennis जो like academy से create करिवे बा established करिवे and the center will be operational by December 2023 and will have 3 table tennis table each. Right. Next question, NAFED to sell Bharat Atta from next week. So NAFED con National Agricultural Cooperative Marketing Federations NAFED is all set to market the Bharat Atta or Bharat brand of Atta wheat flour at a maximum retail price of rupees 27.50
per kilogram in the state from next week. So NAFED has already tied up with the two flour mills Odisha of the state for supplying wheat flour under the Bharat brand. So अधिक किसी जानिबा भारत ब्रांड विषय कौन है भारत ब्रांड? Very good evening, Achyuta. Bharat brand कौन? What is the Bharat brand or Bharat Atta brand? It is a type of wheat flour launched by the Indian government with a maximum retail price 27.50 per kilogram. Market price char रही 35.93 per kilogram. And this initiative is part of ongoing efforts to stabilize essential commodity price and provide relief to consumers. The atta is made accessible through various outlets including the Kendriya Bhandar, National Agricultural Cooperative Market Federation of Limited India Limited NAFED, and NCCF, National Cooperative Consumer Federations, aiming to benefits or broader consumer base, right? So the government has also been selling chana dal under the Bharat brand. So NAFED founded के बे ये 1958 रे and NCCF ये established 1965 रे are prominent cooperative organizations registered under the Multi-State Cooperative Society Act of 2002 for agricultural product procurement and marketing. या ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ setup ହେଇଥିଲା. Then next ଥିବା Odisha to get AIFF and FIFA Football Academy. Why news? Because the All India Football Federation's AIFF World Class Football Academy in Odisha will soon be a reality with Arsene Wenger. Okay, Wenger. So the chief of global football development of FIFA. The academy will set up under the FIFA talent development schemes. Yeah, these schemes under a academy को set up कराଯିବ ओडिशा रे very soon. So India's first indoor athletics stadium in Bhubaneswar. Why news? Bhubaneswar will have India's first indoor athletics stadium by end of this year. Italian firms Mondo Spa has set up 10,000 square meter track in the stadium, which is going to be the first of its kind in India. India re Bharat re prathama Odisha re indoor jo stadium hai. So the stadium can accommodate 120 athletes for full-time coaching. It also has classroom for studies, medical facilities, and a dedicated pantry for inmates. Okay, जो अंतेवासी अछंती बा जो hostels रे जो रहिबे बा जो academy रे जो मन रहिबे. So then आमे देखिबा next Soluga Pradhan to be deputy speaker or Saluga Pradhan to be deputy speaker. Why news? Senior tribal leader and BJD MLA Saluga Pradhan is all set to become the next deputy speaker of the state assembly and two-time MLA from G Udayagiri Kandhamal. ता पूर्वरु speaker को कथा मु last video रे जो हमर पूर्व दृष्टिकोण video रे सेठी मु discuss करतली. Article 178 contains the corresponding position for speaker and deputy speaker of legislative assembly. मन रखिथिबे politics section रे खास करी 178 sorry. So article 178 regarding mu au kichi information provide kochi like speaker and deputy speaker kora kon सब provisions रही. So every legislative assembly of state shall as soon as may be choose two members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, and the assembly shall choose another members to be speaker or deputy speaker as the case may be. Okay. So elections of speakers केमती भाବରେ election ହେଇଥାଏ तार total procedure एठी मु provide करछि एठू देखि नेबे. Now देखिबा President Murmu flag of 3 new trains from Odisha Badam Pahad. So why news? President Draupadi Murmu flagged off 3 new trains from Badam Pahad railway station under the Rairangpur divisions in Mayurbhanj district on Tuesday. Okay, so 3 new trains are like Badam Pahad Tatanagar Memu and Badam Pahad Raulkela Weekly Express, Badam Pahad Salimar Weekly Express. On these occasions, Murmu virtually inaugurates the new Rairangpur Postal Divisions, released a commemorative special cover of Postal Division and laid the foundation stone for the redevelopment of Badam Pahad railway stations. So Murmu said the government has launched PM Janman. What is PM Janman? हमें जानिबा PM Janman on the occasion of like Janajati Gaurav Divas
And this year, the development of particularly vulnerable tribes, PVTG groups. So, janiba kon PM Janman. So, recently, Union government has approved Pradhan Mantri Jan Adivasi Nyaya Maha Abhiyans, jahaku ame kahitau PM Janman. A monumental rupees, okay, 24,104 crore tribal welfare initiative. It marks a significant step towards uplifting particularly vulnerable tribe or PBTGs. It is said to revolutionize the lives of over 40 lakhs individuals across 75 tribal communities in 18 states and Union Territory Andaman and Nicobar. So in India, the PBTG is a subclassifications of scheduled tribes and that is considered more vulnerable than the regular scheduled tribes. PBTGs कौन ता विषय में डिटेल रे पूर्व वीडियो रे मध्य पूर्व मैगजीन रे मध्य डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देछि सेटु देखि नेबे सो ये थिला पीएम जनमन को विषय रे देन हमें देखिबा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च स्कीम्स फॉर फिशरमेन एंड वुमेन एसएचजी मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना शुभारंभ कले सो 16टी कार्यक्रम चलित वर्ष खर्च हम 448 कोटी जोटा कि हमें एबे देखिबा व्हाई न्यूज बिकॉज चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन ट्यूसडे लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मोर देन 1 लाख फिशरमेन एंड 50,000 फिश farmers and around 11,000 women self-help groups. The scheme aims to increase the fish production in the state, creating livelihood support for fishermen and further strengthening the WSHG Women Self-Help Group. He said the scheme will be implemented under the 5T initiative. So about Odisha Mukhyamantri Matsyajeevi Kalyan Yojana, the state's fish productions has increased 4 times in last 20 years, according to the chief minister, who also highlighted the state's improved fish growth. Exports the marine fish has topped 45,000, 45, yes, 4,500 crores. Memorandum of Understanding MOU Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding. Okay, MOU sign करो जो हमें चुक्ति हमें sign करो बढ़िया आपको. He claimed that the boost fish output, Odisha is the first state in the nations to implement Odisha Fisheries Policy 2015 and Odisha Reservoir Fisheries Policy 2012. This financial year's rupees 48 crore will be spent on 16 welfare program for fishermen that are part of this project and its goal to make over a lakh fishermen and the state better off there financially. The Mukhyamantri Matsyajeevi Kalyan Yojana will boost the economy among the fishermen of the state. Objective कौन अछि? Objective of Odisha Mukhyamantri Matsyajeevi Kalyan Yojana. The scheme's primary goal are to boost fish output, open job possibilities, empower women, and strengthen the state's economy. The CM requested the fishermen, okay, like fishermen and the women self-help organizations utilize these programs to enhance their personal and state prosperity on these particular occasions. The Mukhyamantri Matsyajeevi Kalyan Yojana will benefit over 1 lakh fishermen, 50,000 fish farmers, and over 11,000 women self-help group. Then I'm going next. Odisha DRDO test niche anti-ship missile. Niche anti-ship missile NASM successfully. Okay. Konroichi Wide News. In a major milestone is ongoing defense preparedness. India on Tuesday successfully test fired an anti-ship missile from a naval helicopter over Bay of Bengal, validating the newly developed weapons lethality of state-of-the-art technologies. Indian Navy is associated with the Defense Research Development Organizations DRDO, conducted guides flight trials of fast indigenously and developed naval anti-ship missiles NASM from seeking for 42B helicopter. Okay, so developed by DRDO, the missile is the first indigenous air-launched anti-ship cruise missile developed for the Indian Navy. The missile followed a desired sea skimming
trajectory and reach the designate okay target with a high degree of accuracy, validating the control, guidance and mission algorithm. Next time ଯିବା ओडिशा एक्सपोर्ट फर्स्ट consignment of cashew to Bangladesh, जोटा कि बांग्लादेश एंड जो इंडिया रो रिलेशन मध्ये स्ट्रांग करिवो, जोटा कि ओडिशा तरफ जाउची कोन अछि न्यूज रे. In a landmark achievement, Odisha exported a consignment of cashew nut for first time to Bangladesh to mark National Cashew Day, जोटा कि 23 नवंबर रे पालित हुए. The Agricultural and Proceeds Food Products Export Development Authority (APEDA) under the Ministry of Commerce and Industries and facilitated the shipment for the state. And then Amijiba, CM Naveen Patnaik rolls out 52 Lakshmi bus in Raigada districts. So CM Naveen Patnaik recently launched the location accessible multimodal initiative Lakshmi scheme in Raigada districts. The bus service will bring the transformation in rural transportations. It will connect the villages, build social connections, and ये आपनकर regional disparity क्षेत्र में मध्य बहुत ही helpful रहेबो. And communication खास करी कट ऑफ एरिया रे. देन हम जीवा नेक्स्ट. ओद विन्स बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओड. Okay, why news? Because Ode, a short film about receding like beach lines of Goa, has been awarded with the Best Film Award in the third edition of 75th Creative Minds of Tomorrow CMOT initiative held at the International Film Festival of India IFFI. The 75th Creative Minds of Tomorrow is a IFFI initiative started in 2021 to mark 75th years of Indian independence. Right? Just a minute. Then we देखिबा ओडिया राइटर दिलेश्वर राणा to receive साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. ओडिया राइटर. Why news? Because Odia writer Dileshwar Rana will receive the prestigious Sahitya Academy Yuva Puraskar 2023 for his book short story Senera. Okay, बा जोटा कि हमें कहता हूँ सेरेरा ओडिया मीनिंग रे. So he published Senera, a book of 10 short story in 2021. The book tells story of Kalahandi's culture and folklore, जो किंवदंती लोककथा in contemporary manner. Okay. सो ये थिला एई थरर दृष्टिकोण पई आपण मानक पई बहुत सारा इंफॉर्मेशन जोटा कि मेंस एंड प्रीलिम रिलेटेड. आई होप आपण मानक भल लागि तो जो माने भी अटेंटिवली सुनुतले मते निजर फीडबैक निहाती बाबर शेयर करंतु केमिति लागिला एई मंथ रे आपण को दृष्टिकोण एंड को सब इंफॉर्मेशन आपण को पूर्व जणा नथला एंड को इंफॉर्मेशन एबे जानिले जस्ट शेयर विथ मी क्विकली. जो माने भी मते लाइव सुनुचंती निजर फीडबैक मो सहित शेयर करंतु केमति लागला वीडियो टिकु एंड खास करी वीडियो टिकु लाइक करंतु मैक्सिमम निज भितर शेयर करंतु जते भी ग्रुप्स अछि आपनकर पर्सनल ग्रुप हो प्रोफेशनल ग्रुप हो सबथरे कुछ शेयर करंतु सो दैट मैक्सिमम रीच ए वीडियो टी पहुंच पारु समस्त क्षेत्र रे फ्री ऑफ कॉस्ट रे जोटा कि अवेलेबल करा होची रे एकेडमी तरफ एंड खास करी मु आपन मानक पई जेमति भाबरे प्रिपेयर करके आनुची सु करंट अफेयर गुडी को से गुडी को क्वेश्चंस आपन एतर प्रीलिम्स रे मध्ये देखिचंती. निहाती आउरी बहुत सारा क्वेश्चंस मु आपन सहित शेयर करबी करंट अफेयर माध्यम रे. खाली करंट अफेयर तो नुहे एथरे मेंस रिलेटेड कंटेंट भी जेमति कहले आपन को आर्ट एंड कल्चर पार्ट आर्ट एंड क्राफ्ट्स पार्ट फ्रॉम जनवरी टू प्रेजेंट जो आज पर्यंत बहुत सारा कंटेंट मु प्रोवाइड करछि जोटा कि मेंस रे आपन को हेल्प करिवो. ओके एंड सेइतरु ही आपन नोट डाउन भी करि परिबे बिकॉज़ ये बहुत फिल्टर करिकि मु सेई वे रे प्रिपेयर करताई both factual point and descriptive point add करते so that आपण मानको इतर कंटेंट राइटिंग पई प्रॉब्लम न हो. तो समस्त निजर फीडबैक शेयर करंतु क्विकली देन हमें ई वीडियो टिकु ई क्लास टिकु एठी एंड करिबा क्विकली एई 5 to 10 सेकंड भीतर आपण को निजर मतामत एई चैट सेक्शन रे मते निहाती भाबरे जणांतु. ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड आज रो वीडियो टिकु हमें महात्मा गांधी क्वेश्चंस. यस महात्मा गांधी क्वेश्चंस मु रिगरसली पूरा चैट पे प्रोवाइड करथली जो हमर दृष्टिकोण रे सेतिर क्वेश्चन डायरेक्टली आसला
ମୁଁ ଯେମିତି କହି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ୱେରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ, ଯୋଉ ୱେରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଥାଏ, ସେଇ ୱେରେ ହିଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗାଜିନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ବିକଜ ମୁଁ ଅନନେସେସାରୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ରଖେ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଯୋଉଥିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଥିବ ଯୋଉ ମନ୍ଥରେ। ମୁଁ ସେଇ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି କରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କିଛି କମିଯାଏ, କୋଉ ମନ୍ଥରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ, ବିକଜ ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆସିପାରିବ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଦେବି, ଏଣ୍ଡ ସେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ। ଓକେ, ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ୟେସ୍, so thank you everyone and good night all of you, and ଆଜିର ସେସନ କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ରେ, and till then ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ପଢାପଢି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, and ଖାସ କରି ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥ ରୁ ଯେତେ ବି ଆମର ଲାଇକ୍ ଭିଡିଓସ୍ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ray.academy ସାଇଟ୍ ରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ସେଠୁ ନୋଟ ଡାଉନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।